जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हेयर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की सेकंड बुक के बारे में। एंड आई वुड से लाइक दोनों बुक जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकंड बुक दैट वी आर डूइंग एंड दिस इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। इसके हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। आई होप आप वो चारों चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो कर चुके हो। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी वेरी की टॉपिक और चैप्टर दैट इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो इंडिया में किस तरह से एमर्ज हुई, क्या जो है कॉन्टेक्स्ट था सोशियोलॉजी के एमर्ज करने का, एंड व्हाट वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अर्ली सोशियोलॉजिस्ट या इनिशियल जो भी फाउंडिंग फादर्स थे इंडियन सोशियोलॉजी के, उनको जो है देखने थे, क्वेश्चन समझने थे और उनको एक्सप्लेन करना था। एंड देन फर्दर विल टॉक अबाउट 4 मोर इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने कि बेसिकली सोशियोलॉजी को इंडिया में एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बनाया और उसको जो है कहीं ना कहीं फेमस भी किया। सो गाइज, इसी चीज़ चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। एंड जैसे आपको पता है कि स्टार्ट करने से पहले यू शुड गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन O2IS अकेडमी की। सो यहाँ पे हमने सोशियोलॉजी के डिस्कशन फोरम्स बना रखे हैं वेर यू कैन डिस्कस एंड गेट सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स ऑन द वेरियस फिनोमिना, सोशल फिनोमिना जो अपने आसपास में हो रहे हैं, प्लस लाइक फॉर यूपीएससी एंड फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, लाइक जो भी इस एग्जामिनेशन के आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो प्रील्यूड दे लेता हूं फटाफट से कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, विल टॉक अबाउट द फॉर्मल बिगिनिंग्स, इंडिया में किस तरह से हुई। विल टॉक ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट कि भाई इंडियन कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन विल टॉक अबाउट सम ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आई वुड से एक्सीडेंटल सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि इस लाइक सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन जो है स्टैब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि अनंत कृष्ण अय्यर जी हो गए या शरद चंद्र रॉय जी हो गए। देन विल टॉक अबाउट 4 important founding fathers of sociology in India. This is Govind Sadashiv Ghure, G.S. Ghure, and then we'll be talking about Dhurjati Prasad Mukherjee. We'll talk about A.R. Desai, and then finally we'll be talking about Maisuru Narasimhachar Srinivas और M.N. Srinivas famously known as. So basically हम इन 4 फाउंडिंग फादर्स को पढ़ेंगे। अगेन चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए एंड लाइक काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बोला कि सर चैप्टर जो है थोड़ा सा अगर हम लोग छोटे कर सके, तो छोटे तो नहीं कर सकते बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं लाइक लिमिट करने की कोशिश करता हूँ सो दैट हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के ही लाइक कंटेक्स्ट में बात कर सकें एंड नॉट लाइक कि जो हम यूपीएससी में या फिर बाकी हम लोग स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में या इवन लाइक यूजीसी में हम लोग बात करते हैं, तो उस लेवल पे हम लोग नहीं जा रहे हैं फिलहाल। आई जस्ट वॉन्ट टू इंश्योर कि भाई जो आप अभी सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं उनका एक इंटरेस्ट बने सोशियोलॉजी के अंदर एंड देन सोशियोलॉजी को जो है और डीपर एस्पेक्ट्स में लेके जाएंगे। सो मैं बेसिकली इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ अगेन, जैसे मैंने पिछले चैप्टर किया था। सो आई विल बी टॉकिंग सम पार्ट ऑफ इट, लाइक कुछ पार्ट जो है मैं पोर्शन जो है एक पहले पार्ट में कवर करूँगा एंड देन जो है आई विल बी टेकिंग द सेकेंड पार्ट बिकॉज अगेन इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर और हर एक इस पायनियर सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक बात की जा सकती है और उनके इतने एस्पेक्ट्स है बात करने के लिए जिसको लाइक हम लोग अगर 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम ले वो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू समराइज। ठीक है जी। सो आई ट्राई टू स्टिक माई सेल्फ टू एनसीईआरटीज कि भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एंड देन व्हेन वी आर गोइंग टू डू आवर सिलेबस पोर्शन ऑफ फॉर यूपीएससी एंड फॉर अदर स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, लाइक सबका जनरली होता है, तो इसमें हम लोग जो है जब भी हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आएंगे सो विल बी टॉकिंग लॉट डीपर, विल गो डीपर इनटू देयर एम्फोसिस। मैंने नागला जी की बुक बताई थी तो विल टॉक अबाउट दैट, वहाँ से इनपुट्स लेंगे हम लोग काफ़ी सारे एंड दिस विल बी अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो एंड एज अ स्टूडेंट और लाइक एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट of this chapter. This is Indian sociology. So first and foremost important thing was the establishment of sociology as a formal discipline, as an academic discipline in the academic institutions in India. So academic institutions, like highest epitome of academic institutions in India is the universities. So हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सिटी जो है इंडियन सोशियोलॉजी का जो फॉर्मल स्टार्ट है यूनिवर्सिटी लेवल पे, दैट हैपेंड अराउंड 1919 when a department was introduced, sociology was introduced in the department in 1919 by पैट्रिक गिडिस एंड इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में डिपार्टमेंट के अंदर सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया था। सो यहाँ से जो है एक फॉर्मल बिगिनिंग हम लोग को देखने को मिलती है। इट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स ओनली एंड देन इवेंचुअली 1920s में आके 2 और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ थी दैट वाज लाइक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ थी कलकत्ता की और लखनऊ की। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है देखा कि इन सोशियोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो है स्टार्ट हुए, बोथ एट द लेवल ऑफ टीचिंग ऑल्सो एंड एट द लेवल ऑफ रिसर्च ऑल्सो। एंड इट वॉज नॉट ओनली सोशियोलॉजी, इट वॉज ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजी विच स्टार्टेड टेकिंग रूट्स इन द इंडियन एकेडमिक स्फीयर। ठीक है जी, क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा था, वेस्ट में जो है एंथ्रोपोलॉजी बिकेम अ बिग थिंग, बिग डिसिप्लिन। सिमिलरली सोशियोलॉजी हैड इट्स नीश एंड वो क्या कर रही थी, वो भी जो है धीरे धीरे पैर पसार रही थी। बहुत सारे अच्छे सोशियोलॉजिस्ट जो है फाउंडिंग फादर्स के बाद जो है बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट निकल के आ रहे थे विच वर टॉकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे। सो दैट इज़ हाउ इंडियन सोशियोलॉजी केम इनटू गेम। ठीक है जी, बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाज कि भाई इंडियन जो सोशियोलॉजी है इसका कंटेक्स्ट क्या था, बिकॉज इंडिया की जो कंडीशन थी उस टाइम पे इट वाज वेरी वेरी पेक्यूलियर, है ना। बड़ा ही असमंजस में डालने वाली चीज़ थी कि भाई सोशियोलॉजी को इंडिया में स्टार्ट क्यों किया जाए, और अगर किया भी जाए तो वो सोशियोलॉजी क्या करेगी इंडिया में, क्या इंडिया को सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। सो इवेंचुअली इसमें, क्योंकि इसको आपको थोड़ा सा जो है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, बिकॉज सोशियोलॉजी जो है इट इमर्ज एज अ सोशल साइंस, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ सोशल साइंस बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि यूरोप देख रहा था। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसके कारण जो चेंजेस देख रहे थे हम लोग, सोशल चेंजेस, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशियोलॉजी जो है निकली थी। बट इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी इट वॉज मोर सो इन कंटेक्स्ट टू कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, सो कॉलोनियल जो है, इंडिया वाज अ कॉलोनी टू ब्रिटेन एंड यहाँ की जो इकोनॉमी इट वाज मेड सबसर्विएंट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। इसके साथ इससे बेसिकली क्या हुआ कि जो सोशियोलॉजी है इसमें, या सोशियोलॉजी का जो एप्लीकेशन है इंडिया में, इट बिकेम वेरी यू कैन से कॉलोनियल कलर्ड, है ना। तो भाई कि यहाँ पे सोशियोलॉजी क्या करेगी, सिंस इट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इंडिया वाज अ कॉलोनी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, लाइक दोज स्पेशली जो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ प्रिमिटिव सोसाइटी, और यहाँ पे जो है प्रिमिटिव ट्राइबल्स मिलते थे। तो दे थॉट कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज मोर it does make more sense as far as understanding the society in India is concerned. So both of these things, like the modernity in India was not the modernity which was being seen in the Europe, and India was a colony. And second thing was like social anthropology, the question of social anthropology, should India be focusing more on social anthropology, because like it was considered more as a you can say primitive society by western anthropologists. But like अगर आप इसको भी देखेंगे तो even sociologists around the world, as well as those who were like gaining prominence in India also, they thought that India was a unique mix. It was a unique mix of like both ancient as well as like ancient civilization, advanced civilization, as well as we found that there were primitive tribes in India. So it was a mix of traditionality. It was a mix of traditionality and modernity. So because of that, these questions came into being. And finally, like when India got independence, like what was the role the modern nation state was to put forward, and how sociology as a discipline, as an academic in the academic sphere, how it can help the sovereign in becoming a welfare state. So ये सारी चीज़ें जो हैं, they were arising the question, the context which was to be seen in sociology. And it was these initial founding fathers who not only tried to provide the context to sociology, but also tried to answer these preliminary questions. इन questions को ना सिर्फ आंसर करने की कोशिश की उन्होंने, बट उन्होंने कंटेक्स्ट भी प्रोवाइड किया, उन्होंने एक सब्जेक्ट मैटर भी प्रोवाइड किया, एंड दे ट्राइड टू इंश्योर that sociology gets those questions, finds new questions, and try to solve those questions vis-a-vis the broad society. ठीक है, इस वाइप आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें लगा होगा। नाउ जो बेसिक beginning थी, the basic beginning was, you can consider it more so as an accident, because like whenever a new discipline comes into the academic sphere, बहुत सारे students जो हैं they are not very much inclined to take that particular subject, because obviously बात है कि भाई there is a question of career, that how a particular discipline will shape their career. तो इस चीज़ को देखते हुए like most of जो early स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें इंडिया में, एंड इवन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, तो दे वर मोर सो
दे बिकेम सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बाय एक्सीडेंट, ठीक है जी. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें लाइक थोड़े सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एंड एनसीईआरटी इनके बारे में बात करता है, जैसे कि LK अनंत कृष्ण अय्यर हैं, ठीक है जी. सो इन्होंने बेसिकली ही बिकेम अ बिग नेम इन एंथ्रोपोलॉजी बट ही वाज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है जी. ही स्टार्टेड एज अ क्लर्क इन कोचिन स्टेट एंड इवेंचुअली बिकेम अ टीचर इन द स्टेट ऑफ कोचिन, एंड धीरे धीरे जो है ही गॉट इन्वॉल्व इन टू द एथनोग्राफिक सर्वेज ऑफ द स्टेट, ठीक है जी. सो जो कोचिन स्टेट है वहाँ पे दीवान के साथ जो है ही स्टार्टेड असिस्टिंग द एथनोग्राफिक सर्वेज. ही यूज्ड टू वर्क ऑन द वीकेंड्स एंड इवेंचुअली धीरे धीरे जो है इनका जो एथनोग्राफिक जो सर्वे में जो ये रिजल्ट लेके आ रहे थे, जो इनका जो है वर्क था, ये धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होना स्टार्ट हुआ. उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी जो है अपनी प्रेसिडेंसी स्टेट्स में वहाँ पे भी एथनोग्राफिक सर्वेज कराना चाहते थे और इनको सुपरिटेंडेंट का जो है ऑर्डर दिया गया कि भाई ये जो है यहाँ पे एथनोग्राफिक रिसर्च करें. एंड इन एथनोग्राफिक सर्वेज से जो है धीरे धीरे क्या हुआ, इनका नाम जो है बनता गया. इवेंचुअली ही हेल्प्ड लाइक ही बिकेम अ गुड नेम इन एंथ्रोपोलॉजी डिस्पाइट बीइंग अ वेरी एमेच्योर, बट ही हैड अ कीन आई टुवर्ड्स the ethnographic surveys and key eye towards the like social reality. So धीरे धीरे जो है क्या हुआ, इनका नाम बनने स्टार्ट हो गया, got national and international recognition. Even Britishers recognized him as a good scholar, and finally like he helped the starting of first postgraduate anthropology department in University of Calcutta, ठीक है जी. So यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे he started establishing anthropology as an academic discipline. Eventually got an honorary doctorate from German university during time when he was taking lectures in Europe, है ना. So like eventually he was conferred as a title of Rao Bahadur and Diwan Bahadur by Cochin State. So it was just purely because of accident that Krishna Iyer became the anthropologist, ठीक है जी. One more guy which has been highlighted by the NCERT and it is very very important also, Sarat Chandra Roy. So Roy eventually became the authority on Chota Nagpur tribes, the tribes which were there in Chota Nagpur, like today's Jharkhand and Chhattisgarh area. So here eventually what happened was like Sarat Chandra Roy was a lawyer, and he did law from Calcutta University, and eventually he started practicing in Ranchi. During his practice in the court, he used to assist court vis-a-vis the tribal matters, and eventually he had to understand tribal languages or interpret tribal languages for the court. So यहाँ से जो है इनका जर्नी स्टार्ट होता है. He goes to Ranchi, he stays there for 40 years. He was interpreting tribal customs and laws to the courts in Ranchi, and eventually with this slowly he entered or he started understanding the tribes more, their customs, their language, and वहाँ से जो है he started doing intense field work in all around Chota Nagpur region, ठीक है. Despite he being very immature, he didn't not knowing very specific tools and specific methods of research, but he had a keen eye. So he was able to come out with a very very superb monographs detailing very very minute aspects of these tribal people, especially Orions, Mundas and Khairas, and eventually published like more than 100 articles in like British and academic journals, right? So he became the leading authority on culture and society in the for the tribal people of Chota Nagpur, and he also founded a journal called as Man in India, which is even today it is published and like a good anthropological journal which is there in India. So both of these people were they were accidental, or anthropology came to them, or social anthropology came to them by accident, and they were able to excel in this particular sphere. So that is what I'm trying to say by when first the discipline comes, a new discipline comes, we find more so like people who accidentally get into this particular discipline and then eventually shine. Okay, so these were these people, and then let us talk about Indian sociologists. So there were particularly many sociologists which we can say which shaped the Indian sociological sphere and the academy. They built up the academic circle of sociology in India. But like specifically I would like to, or this if we go according to the NCERT, so there are 4 important sociologists which have been discussed here, and I'm going to stick my conversation with respect to Indian sociologists based on these 4 thinkers only. So like 4 thinkers who were there was Govind Sadashiv Ghure, Durjati
Prasad Mukherjee, Akshay Ramanlal Desai, and M.N. Srinivas, Mysuru Narasimhachar Srinivas. So these were, you can say, they were the pioneers who eventually answered the questions of sociology which were there, which were being asked when this discipline came into being in India. And then eventually they not only solved, or they not only answered these questions, they gave their own unique context to sociology in India, and then they eventually produced new questions which even are answered till day to day, right? So we're going to talk about that. And like they came to the age at the time of colonial era. All of them were like they were born in the colonial era, but eventually they were there after the independence also, and they saw all those social changes, and they added a lot of information, they added a lot of academic people, they eventually systematized the discipline, they established the formal disciplines, formal institutions where Indian sociology started prospering, right? So like, and they were also very much deeply influenced by Western traditions of sociology. Like most of Western sociologists had a deep impact not only on India, but it was throughout the world where they were having the influence. And these initial founding fathers of sociology in India, they were also very much influenced by their philosophy and their perspectives. So this we will be seeing when we'll be talking about them, very much influenced, but still they try to blend that influence in a very Indian way. They try to use these perspectives, use their theories in an Indian context, and eventually try to shape the Indian sociology and answer that initial questions which were there for sociology, right? So this is how Indian sociology came into being. And let us dive into or let us talk about the Indian sociologists one by one. So I'm going to, in this part, I'm going to talk about Govind Sadashiv Ghore, and then next part I'm going to talk about D.P. Mukherjee, A.R. Desai, and M.N. Srinivas. Okay, so let us start with it. So let us learn something about Govind Sadashiv Ghore, and again I'm going to stick myself to NCERT here. Now, born in 1893, he was from the Western India, like Konkan coastal region of Western India, and eventually he received an MA degree in Sanskrit and English. So this had a very deep impact on him because of his being very much affluent in Sanskrit. He was able to able to read the historical texts that we people had, the sacred texts that we people had, and eventually he was able to build his so-called historical textual approach, which we could see further in his theories, right? So after that he got a scholarship from University of Bombay, and for he went abroad and he like studied with L.T. Hobhouse, a very prominent sociologist of that time. We'll be talking about him like when we'll be doing a complete sociology course. And then he eventually studied under W.H.R. Rivers, where like his Rivers diffusionist approach, diffusionist perspective, he was very much influenced by the diffusionist approach, and eventually he used it to understand caste and race in India, right? So he submitted his PhD, and the topic was the caste and race in India, and eventually this was his doctoral dissertation, and eventually this got published as a book also, and it became very, very famous also, like caste and race in India. And then eventually he came to the Calcutta, he became a professor there, and then he joined the Department of Bombay University, where he stayed there for next 35 years and trained the next generation of sociologists, including A.R. Desai and M.N. Srinivas, right? So he was also a pioneer in establishing Indian Sociological Society, which is today in India the most influential sociological association that you can find in academic circles. And eventually he was also the person to launch the sociological journal in India. This was Sociological Bulletin, right? So eventually he retired from the university, and it was after the retirement that around a majority of his work was published as a book. And so that means even after retirement he was very active, and eventually he died at the age of 90, right? So the works that he did, if we talk about Govind Sadashiv Ghore's his contributions to Indian sociology, contributions to
the academic circle. So again, he was the person to basically nurture sociology and make it increasingly like more Indian in approach, right? Most of the sociologists before Ghure, they were Western, either Western scholars, or they were in administrators who were like writing with a Western viewpoint, within Western bias, and there was an ethnocentric bias, and he was the person who tried to Indianize this discipline. His perspectives also called as the modern Indology. He was the person who started modern Indology. That means studying the Indian society from Indian context. So he was the person to basically nurture sociology and make it more Indian. Then he was also the person who is not only established the Department of Sociology in Bombay, but he was also able to like combine teaching and research along with like providing a better merger with social anthropology and sociology. So to build a composite discipline, he was able to add not only teaching and research together, but also the various disciplines that was sociology and social anthropology. So various themes in which he wrote about was like caste and race in India. He talked about tribes, so we'll be talking about tribes, Ghure on tribes. He had some deeper emphasis on, or deeper inputs on, the tribes in India. Then he talked about kinship, family and marriage again. Then he also wrote about culture. He also wrote about civilization and role of cities. He was kind of optimist about the role of cities in development. Then he also talked about religion. He talked about sociology of conflict and integration. So there were a lot of areas, broad range of areas where Ghure eventually contributed and nurtured or enriched the Indian sociology, right? So let us talk something about Ghure's perspective on tribes, because like tribes, Ghure's detailed discussion, or you can say detailed inputs on tribe came at the time of 1930s and 1940s, where there was a debate basically going on as far as the tribal societies were concerned in India, as to how the state has to respond to them, because tribal jo the, they were comparatively primitive. They had, their culture was they were not as developed as rest of the Indian mainstream society was there. तो कल्चर भी जो है डिस्टिंक्ट था, एंड दे वर कंपैरेटिवली वीकर ऑल्सो, इकोनॉमिकली वीकर ऑल्सो. सो दिस वॉज द कंटेक्स्ट कि भाई ट्राइब जो है, स्टेट जो है वो ट्राइब्स के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड करे, कैसे जो है उन्हें डेवलपमेंट के साथ जो है एसोसिएट करना है, कैसे उनको साथ में लेके चलना है. ठीक है. सो देयर वाज अ डिबेट ऑफ आइसोलेशनिज्म एंड एसिमिलेशन, राइट. आइसोलेशन वाज मोर सो लाइक इट वाज फर्दर्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनका मानना था कि भाई जो ट्राइब्स हैं, दे हैड अ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड दे हैव हाई टेंडेंसी ऑफ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड ऑल्सो. सो दे वर बैकवर्ड्स. दे सेड दैट दे वर बैकवर्ड्स, एंड बाय बीइंग बैकवर्ड्स and both economically and socially backward, so they will get exploited by the mainstream culture, the mainstream society. और अगर उनको बचाया नहीं गया, उनको जो है प्रोटेक्शन ना दी गई स्टेट से, तो जो है इनका जो कल्चर है ये ख़त्म हो जाएगा, राइट. सो दिस वॉज व्हाट द पीपल सेड, एंड दिस इज द डिबेट ऑन आइसोलेशनिस्ट और प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच. ठीक है जी. एंड देन देयर वाज अनदर you can say group which was focusing on assimilation. So they were mostly nationalist people or nationalist leaders, including the intelligentsia. तो ये लोग क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि भाई जो ट्राइब्स हैं, they जो एक्सप्लॉयटेशन है, देयर आइडिया बेसिकली वॉज दैट कि अगर हम लोगों ने ट्राइब्स को उनको मॉडर्नाइज नहीं किया, उनको जो है राइट वे में एसिमुलेट नहीं किया, तो इवेंचुअली वो बैकवर्ड रह जाएंगे, और इसी से जो है ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी. नॉट बिकॉज कि भाई हम लोग इनको कल्चर को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं. ठीक है जी. सो इनका कहना था कि बेसिकली इनका जो ब्रॉड आइडिया था दैट वाज कि ट्राइब्स हमेशा से ही इंट्रैक्शन में रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ,
और अगर ये अभी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जैसा जैसा हमारे देश के साथ, इंडिया के साथ हुआ है कि ब्रिटिशर्स इनके ऊपर आके राज कर गए, अगर हम लोग डेवलप नहीं करें तो इसी तरह से जो है ट्राइब्स के साथ होगा. सो देयर आइडिया वॉज टू एसिमुलेट देम इन टू द नेशनल स्फीयर एंड इंश्योर दैट दे डेवलप अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है जी. तो यहाँ पे जो है घुरे के जो व्यू पॉइंट्स है दे गॉट वेरी मच फेम, एंड ये सोशोलॉजी के बाहर भी जो है इनको काफ़ी नाम मिला इसमें. सो ही वॉज दिस एक्सपोनेंट ऑफ दिस नेशनलिस्ट व्यू, एंड ही सेड दैट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्राइब्स एज अ यूनिक आइडेंटिटी, ही सेड दैट दे वर नथिंग बट बैकवर्ड हिंदूज. ठीक है जी. ये कोई डिस्टिंक्ट कल्चर ग्रुप्स नहीं थे, दे वर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, बट दे गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज और मेन स्ट्रीम सोसाइटी, एंड धीरे धीरे जो है बैकवर्ड हो गए. इस तरह की ये बात करते हैं. एंड ही सेड दैट जो ट्राइब्स है दे हैव बीन कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन विद हिंदुइज्म, और काफ़ी टाइम से जो है इंटरेक्शन चला आ रहा है. ठीक है जी. इट वॉज इनका जो मानना था, आर्ग्यूमेंट गिवन बाय घुरे वाज दैट सिंपली दे वर बिहाइंड दैट प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन हो रहा था, बट जो है दे वर जस्ट बिहाइंड दैट प्रोसेस एंड दे नीड टू बी फास्ट पेस्ड इन दिस एसिमुलेशन प्रोसेस rather than protecting them and giving them a distinct sanctuary type of environment, right? So this was what Ghurye said. So protectionist, as I told you, like they were into that assimilation would lead to severe exploitation and cultural extinction of these tribals. But again, Ghurye was of the point that he said ki bhai, it is not only for the tribals, or it is not only applicable to tribal culture, it is applicable to everyone, है ना. Like Britishers, they were able, because we were backward, Britishers were able to come and they were able to subjugate us, and then our culture was we were exploited because of that. So they wanted ki bhai, this should not happen to the tribals, and whomsoever remains backward is or does get exploited. That's what he wanted to say, right? So again he said that this is inevitable difficulty, these are innate these were the difficulties that are there in the road of development, and then therefore they must be assimilated and their development must be ensured. That's what he said, right? So now this was his viewpoint, Ghure's viewpoint on tribes, and that is how he became a very, very important personality as far as outside the sociology is concerned, right? So इस तरह का डिबेट जो है आज भी हम लोग देखते हैं. वी ऑल्सो सी टुडे ऑल्सो वी कैन सी लॉट ऑफ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स, वी सी देर इज कल्चरल असर्शन और द आइडेंटिटी असर्शन बाय ट्राइबल्स. सो दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू पीपल. डिस्कस द डिफरेंट साइड्स ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव. कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव देखिए कि हम लोग बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट देखते हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चरल मूवमेंट देखते हैं, आइडेंटिटी मूवमेंट्स देख रहे हैं, है ना. There is also a controversy around disproportionate burden that the tribal communities have been forced to bear, कि भाई most of जो आपके mining areas है, they are tribal areas, या tribals की वहाँ पे development नहीं हुई, but वो resources को जो है then further जो है society use कर रही है. ठीक है जी. So like think about these questions and try to find the answers regarding it. That is going to help you again build a deeper analysis on tribes. ठीक है. So we are going to talk about this when we will be talking mainstream sociology or mainstream UPSC preparation, but this is something that you should think about as a student of sociology, also as a UPSC aspirant also. So next basically is the caste and race, and basically Ghure's viewpoint on the caste and race in India. So it was his doctoral dissertation, and eventually this got published as a book called as Caste and Race in India in 1932. And here again Ghure tried to provide a detailed critique on the dominant theories जो कि उस टाइम पे जो है प्रोमिनेंट चलती थी. फॉर इंस्टेंस हर्बर्ट रिस्ले, ही हैड अ व्यू पॉइंट और डोमिनेंट व्यू थ्योरीज मोस्टली दे से दैट कि भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं दे कैन बी डिवाइड इन टू द सेपरेट रेसेस, है ना, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. बेसिकली फोर हेड का शेप के साथ, नोज के शेप के साथ, कलर के साथ हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स को अलग अलग रेसेस में बांट सकते हैं. सो रिस्ले वॉज ऑफ द व्यू दैट जो इंडिया है इट इज़ अ वेरी यूनिक लेबॉरेटरी जहाँ पे हम लोग जो है रेशियल डिस्टिंक्शन जो है काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज जो कास्ट थी इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू रिस्ले, ही सेड दैट द कास्ट बेसिकली वो सालों लाइक लाखों जब से भी है तब से जो है वो क्या कर रही हैं, दे हैव बिन प्रैक्टिसिंग द डिवीजन, दे हैव बिन प्रैक्टिसिंग सो कॉल्ड डिवीजन, रिजिड डिवीजन को जो है वो मेंटेन करते आ रहे हैं.
एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है यहाँ पे रेशियल मिक्सिंग नहीं हुई है, एंड सो जो है कास्ट को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द रेशियल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, राइट. ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट, रिस्ले वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट कि भाई जो बेसिकली लोअर कास्ट हैं, दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड वर ऑफ डिफरेंट रेस, एंड जो हायर कास्ट हैं जनरली they were the people who came to India, like they were the Aryan people who came to India and they settled here, right. So they were also of different race. So this racial basically difference or the racial distinction, जो so called dominant theories जो हैं उस टाइम पे रेस के ऊपर लगाई जाती थी या रेस की लगाई जाती थी, and then eventually this was seen that even caste can be used to understand this racial difference or to like basically study them, right. But like जो घुरे थे, he said more so Risley's theory, he believed in Risley's theory, but it was broadly true for northern India, right. He said that Risley was okay, like this theory can be furthered, but he said that it is only applicable to northern India because यहीं पे जो है rigidly कास्ट की जो हायरार्की है, कास्ट का जो एक वाटर टाइट इंटरेक्शन है उसे मेंटेन किया जाता है, बट इट वॉज नॉट ट्रू फॉर दी सदर्न इंडिया, राइट. अगेन अदर पार्ट्स में जो है इस तरह से लाइक एंटर ग्रुप के डिफरेंसेस जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सिस्टमैटिक नहीं थे कि हम लोग रिस्ले की जो थ्योरी है या फिर डोमिनेंट थ्योरी है उसको सही मान सके या वैलिड मान सके, राइट. ही सेड दैट मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इंडो गंगेटिक प्लेन्स, यहाँ पे जो है कंप्लीट रेशियल मिक्सिंग हुई है, इस करके जो है काफ़ी टाइम से होती आ रही है, और इस करके हम लोग जो है हर्बर्ट ये जो रिस्ले की थ्योरी है उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. एंड इसके बाद बेसिकली the most important part of this book is that Ghurye tries to define the different attributes of the caste. So caste system के different attributes, basically अलग caste के different attributes जो हैं वो उन्हें define करने की कोशिश करते हैं. And he uses this textual approach to it, historical textual approach to understand caste and define the different features of the caste. ये जो है अलग अलग जो है जो historical text है इंडिया के अंदर उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, and वहाँ से जो है ये definition निकाल के लाते हैं, which again now till this time is considered as a very very classical definition of caste, and these features again are very very important. UPSC में भी इसे पूछा जाता है, ठीक है जी. So what were these 6 basic features जो कि caste के इन्होंने दिए थे? These were again सबसे पहला था सेगमेंटेड डिवीजन. सेगमेंटेड डिवीजन का मतलब क्या था? बेसिकली यहाँ पे हमें सेगमेंटल कैरेक्टर देखने को मिलता है कि भाई एक कास्ट और दूसरे कास्ट के बीच में जो है हम लोग क्या है डिवीजन देखते हैं, हम लोग जो है डिवाइड देखते हैं, एक जो है वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन देखते हैं, ठीक है जी. जो व्यक्ति जो है किसी कास्ट में जन्मता है वो उसी कास्ट का हो जाता है, अब उसे जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता. वंस अ पर्टिकुलर ब्राह्मण ऑलवेज रिमेन्स अ ब्राह्मण. सो दिस सेगमेंटेड डिवीजन जो है वो हमें देखने में मिलते हैं. दिस वॉज अगेन पेक्युलर फॉर दी कास्ट. देन सेकंड ही टॉक्स अबाउट इज हायरार्की. नाउ हमारा जो समाज है वो इसे ब्रॉडली बोलते हैं कि अगेन 4 जो है ब्रॉड कास्ट के ग्रुप्स के ऊपर जो है बटा हुआ है. एंड देन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलती है कि हर जो कास्ट है बेसिकली वो अनइक्वल है, एंड लाइक दे आर नॉट एवरी कास्ट इज इक्वल, एंड यू फाइंड दैट वन कास्ट इज अगेन पुट अबव द अदर कास्ट. हायरार्की का एक नोशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रेडेशन का नोशन देखने को मिलता है. देन ही टॉक्स अबाउट कि हाउ दिस डिवीजन सेगमेंटेशन इज मेंटेन्ड, हायरार्की इज मेंटेन्ड थ्रू रिस्ट्रिक्शंस इन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है जी. जो सोशल इंटरेक्शन है इनको जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. एक कास्ट जो है लेट अस से ब्राह्मण जो है वो शूद्र से जो है इंटरेक्शन में रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, एंड दिस रिस्ट्रिक्शन जो है दे आर बेस्ड ऑन द नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन की भाई कुछ काम करने से जो है ब्राह्मण जो है वो क्या हो सकता है, प्योर हो सकता है या पोल्यूट हो सकता है. शूद्र दे कैन पोल्यूट, एंड लाइक ये सब चीज़ें जो है प्योरिटी एंड पोल्यूशन का नोशन जो है इट इवेंचुअली वॉज द गवर्निंग आइडिया ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है जी. देन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. नाउ नॉट एनी अ पर्सन कमिंग फ्रॉम एनी कास्ट कैन नॉट प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन. सो ऑक्यूपेशन भी जो है या डिविजन ऑफ लेबर अगर हम बोल सकते हैं इसको, तो इट वॉज ऑल्सो rigidly it was very rigid, and it was like maintained by the caste system कि
कि भाई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस वर एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कास्ट ओनली, उनका काम जो है वही चल करता है। जैसे ब्राह्मण का काम जो है वो क्या है, स्क्रिप्चर्स का पढ़ना। सिमिलरली जो है वैश्य का काम क्या है, वो जो है कि ट्रेड करना, ठीक है। क्षत्रिय काम क्या है, इट वॉज टू फाइट, है ना, और टू प्रोटेक्ट। सो बेसिकली ये जो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन थे, दे वर अगेन स्पेसिफिक टू दी स्पेसिफिक कास्ट। नाउ ऑल्सो देयर वर हायरार्किकल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो राइट्स एंड ड्यूटीज जो थे बेस्ड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी प्रैक्टिसेस थे उसके राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो हर एक कास्ट के जो है वो अलग अलग थे, ठीक है जी। स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन रिलीजन, अगर रिलीजियस प्रैक्टिस की बात कर रहे थे तो ब्राह्मण का जो है कुछ पर्टिकुलर का जो है चाल चलन होता था या चाल चलन है, देन उसके बाद क्षत्रिय का पर्टिकुलर चाल चलन है, सिमिलरली वैश्य हैं, शूद्र हैं, इस तरह से, ठीक है जी। फर्स्ट 3 कास्ट दे वर कंसिडर्ड एज द्विज बॉन्ड, ट्वाइस बॉन्ड, ठीक है जी। दे वर कंपैरेटिवली कंसिडर्ड एज प्योर कास्ट। सो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, हायरार्किकल राइट्स एंड ड्यूटीज देखने को मिलती हैं यहाँ पे। देन फाइनली अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज, हाउ दिस इंटरमिंगलिंग वॉज स्टॉप्ड। इट वॉज बेस्ड ऑन लाइक घुरे एम्फसाइज स्पेसिफिकली ऑन किनशिप एंड मैरिज, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई जो मैरिज के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन रखा जाता था टू इंश्योर, या इवन अभी भी रखा जाता है, कास्ट में हम लोग देखते ही हैं, ठीक है जी। सो इंटर कास्ट मैरिजेस अभी भी लाइक दे आर नॉट अ नॉर्म, है ना। हम लोग अभी भी लाइक देखते हैं कि भाई बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स यहाँ पे इसको देखने में मिलते हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट देखने में मिलते हैं। नहीं, अगेन रिस्ट्रिक्शंस इन मैरिज में जो है हमने क्या देखते थे कि जनरली कास्ट एंडोगमी एंड गोत्र एक्सोगमी रखी जाती थी। कास्ट एंडोगमी मीन्स कि एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही जो है शादी की जाती थी और अपने गोत्र से बाहर शादी की जाती थी। सो ये जो है इससे क्या था कि एक सेगमेंटल कैरेक्टर, एक प्योरिटी का कैरेक्टर जो है वो, प्योरिटी का नोशन जो है उसको मेंटेन किया जा रहा था, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और द कैरेक्टरिस्टिक विच वॉज गिवन बाय घुरे। तो हम लोग इसको यूपीएससी में कैसे याद करते हैं, SHR करके। सो अगेन आप भी इसको याद कर सकते हो। इट इज़ गोइंग टू अगेन बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, स्पेशली जब हम यूपीएससी में इसको देख रहे हैं तो। Okay, now finally he said that Ghure's definition again definitely helped to make study the caste system more systematic. ज़्यादा systematic way में जो है कास्ट को स्टडी करने के लिए घुरे की इस डेफिनेशन को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। एंड अगेन एज इट वॉज बेस्ड ऑन द क्लासिकल टेक्स्ट, सो इट हैड scriptural impact, scriptural prescription also. But in actual practice we see that there were a lot of features of caste which were changing, and there were a lot of other areas, there were a lot of other aspects to this caste system which was not there in the text but it was actually practiced in the realities, right. For instance जातिस का जो एम एन श्रीनिवास जो जब फील्ड में गए तो उन्होंने जातिस के बारे में बात करी है, ठीक है जी. सो हिज व्यू पॉइंट वॉज मोर सो हिस्टोरिकल एंड टेक्सचुअल इन अप्रोच, एंड इट हिज like analysis of caste in this Caste and Race in India book was more so based on these texts only, right. But like when we'll talk about M.N. Srinivas, his aspects of caste were more based on the field view, and he saw that there were a lot of dynamics in the caste system also. Okay, so we'll talk about that later though, but this was G.S. Ghure for you people as according to the NCERT like chapter 5, and we are going to continue. This is the for as far as this topic is concerned, this session is concerned, yahi pe hum log ise khatam karte hain. We'll talk about the other 3 thinkers, but that we are going to in next part. So guys, thank you very much. Till next time, hope you like this particular session. So please like, share and subscribe. Till next time, happy learning. Bye bye.